Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain software development life cycle, that is SDLC. What is SDLC? SDLC क्या होता है? SDLC एक systematically way है for the developing of the software. तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं. SDLC is the step by step process. जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू प्लान, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन. इसमें प्लान होता है, हमने करना क्या है, बिल्ड, जो हमने काम करना होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है वो हम बिल्ड करते हैं, और इसमें बिल्ड किए हुए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है या नहीं. फिर इसके बाद डिप्लॉय कर देते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाकर यूजर या कस्टमर के एंड पे वो रन करके दिखाते हैं. दैट इज कॉल्ड डिप्लॉय. एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर. And in case of error, we are used to maintain, we are removing the error, that is called maintain. It provides a clear framework who does what, when and why. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट फ्रेमवर्क डिजाइन करता है जिसमें बताया जाता है कि कौन क्या कब और वो कैसे करेगा. यूज फॉर द वेब. किस लिए बनाते हैं, किस लिए एसडीएलसी यूज किया जाता है? यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप, एम्बेडेड एंड क्लाउड सिस्टम. हर तरह के सिस्टम्स के लिए ये एसडीएलसी को बुरोकार लाया जाता है, यूज किया जाता है. बेनिफिट्स इसके क्या? हाई क्वालिटी. इससे हमारी क्या होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है. लोअर कॉस्ट. हम लोअर कॉस्ट के साथ हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. ऑन टाइम डिलीवरी. और क्या कर सकते हैं, हम टाइम पे ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करके कस्टमर के हैंड ओवर कर सकते हैं. And satisfied user, and user also happy because all the requirement are covered in that software. The main phases. इसके मेन फेजेस कौन कौन से हैं? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमने इसमें करना क्या है. प्लानिंग. फिर हम उसमें देखते हैं कि हमने इस काम को कैसे करना है, प्लानिंग करते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी. फिर हम देखते हैं कि क्या ये फिजिबल भी है या नहीं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी देखते हैं. इसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं कि हमने काम कैसे करना है और क्या क्या चीज को कवर अप करना है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. फिर हम उनकी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि ये काम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करना है. डिजाइन. हम डिजाइन पे भी फोकस करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाते हैं. फिर डेवलपमेंट करते हैं जिसको हम कोडिंग कहते हैं. टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, डिप्लॉयमेंट होती है, या फिर हम इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन होती है, और मेंटेनेंस और सपोर्ट. ये सब के सब स्टेप्स है जो कि हम लेटर ऑन इन डिटेल कवर अप करें. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डिफाइन करना क्या होता है? स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एंड एग्री ऑन व्हाट सक्सेस मीन. आपको जो भी प्रॉब्लम दी जाती है, आपको अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना, और क्या उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी उसको समझना बहुत जरूरी होता है. आइडेंटिफाई यूजर एंड स्टेक होल्डर्स. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हु विल यूज दिस सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर आर देयर, व्हाट आर द रोल्स आर देयर, एंड स्टेक होल्डर्स, हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स आर देयर. कैप्चर हाई लेवल नीड्स. और इसमें आपको हाई लेवल नीड्स की जाती है, हाई लेवल नीड्स जो होती है उसको कवर अप किया जाता है. डिफाइन स्कोप बाउंड्रीज. आप इसके लिए स्कोप डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज इसमें इन होगी और कौन सी चीज इन नहीं होगी, कौन सी आउट होगी. कंफर्म एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. हाउ वी विल नो इट वर्क्स. एग्जांपल एजुकेशन. एक एग्जांपल देगी जिसमें एजुकेशन सिस्टम की. स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम. Need a system to manage and semester exam, create papers, schedule room, record marks and generate results. For example, ये एक हमने क्या कर दिया, हमने इसकी ना हाई लेवल पे जो मॉड्यूल होती है उसको हमने डिस्कस
किया है यहाँ पे। Success criteria: result published within 48 hours, error rate is less than 0.5%, role based assess for teachers, exam cell and students। ये इसका क्राइटेरिया है जो कि हमने हाई लेवल पे जस्ट डिस्कस कर दिया। प्लानिंग, सेकंड फेज ऑफ SDLC इज प्लानिंग। फिर हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें हाई लेवल रिक्वायरमेंट मिल जाती है फिर हम उसको प्लान करते हैं कि हाउ वी विल कवर दिस, डिसाइड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। डिफाइन टाइमलाइन, जिसमें हम टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम इस टाइम से लेके इस टाइम तक कवर अप करना है, या कम से कम हमने क्या करना है, इसकी प्रोटोटाइप शो करनी है कस्टमर को। ठीक है। माइलस्टोन्स, रिसोर्सेज, रोल एंड बजट, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो फेलियर की तरफ चले जाती है जिनका जो लो बजट होते हैं। ठीक है, सबसे एक्चुअली तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, टाइम, रिक्वायरमेंट और कॉस्ट। ये आपको तीनों चीजें सही तरीके से पता होना चाहिए, तो फिर आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। चूज प्रोसेस मॉडल, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल फॉर फिक्स स्कोप, अजाइल फॉर इवॉल्विंग स्कोप। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। There are different types of software development methodologies, like one of them is waterfall methodology, agile methodology, scrum methodology, and so many other types of methodologies are available. Every methodology has some drawbacks and some pros and cons are there. Identify major risk and mitigation. हम आपको मेजर रिस्क उसके आइडेंटिफाई करने होंगे एंड मिटिगेशंस, डेटा प्राइवेसी, पीक लोड ड्यूरिंग रिजल्ट डे। पीक लोड को भी आपको कवर अप करना होगा। पिक अ हाई लेवल tech stack, for example, Django, PostgreSQL, SSO with campus ID. All these you can get any one of the stack that will use to develop your project. इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए एंड शेड्यूल, रिस्क रजिस्टर, कम्युनिकेशन प्लान। Many examples, some examples are there by domain. Healthcare, for example, prescription system success equal to 100% audit trail, e-sign, no duplication, dispensing। ये हेल्थ केयर की वन ऑफ द एग्जांपल्स है। रिटेल के लिए पॉइंट ऑफ सेल अपग्रेड सक्सेस less than equal to success equal less than equal to 2 seconds, check out time offline more than 30 minutes। Transport bus ticketing app success equal to QR tickets, seat allocation, refunds within 24 hours। These are the success। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दी और उनका सक्सेस क्राइटेरिया भी दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नंबर डिफाइनिंग में से द डिफाइनिंग फेज primarily focus on what? Writing code, designing the database, stating the problem, scope and success criteria, and running user acceptance test। The correct option is this: stating the problem, scope and success criteria। MCQ, planning. A typical output of planning is source code, project plan and risk register, test cases, and installation manual। The correct option is project plan and risk register। Question number 3, in defining, requirements are approved by। जब डिफाइनिंग फेज में रिक्वायरमेंट्स कौन अप्रूव करता है? डेवलपर्स, टेस्टर्स, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स एंड नेटवर्क डोमेन। कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स, क्योंकि कस्टमर्स ने हमें रिक्वायरमेंट बतानी होती है। लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिस्क एग्जांपल। A good risk for the student's examination system is choosing between tabs versus spaces, server overloaded on result day, students forgetting password, using dark mode। The correct option is server overload on result day।
Server is too much overloaded, and result they are not they are not running a website properly. That is called server overloaded on a certain. Next, we will start 1.4.2.